First advance English sentence structure. चलो खेलते हैं, चलो पार्क चलते हैं, चलो सोते हैं, चलो पढ़ते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं चलो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स। लेट्स मीन चलो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बआसानी इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाएंगे। After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. So, learn and practice this structure as much as possible so that you can gain fluency, and watch this video to end and subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Have a look at complete structure. Let's प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। लेट्स प्ले। चलो पार्क चलते हैं, लेट्स गो टू पार्क। लेट्स गो टू पार्क। चलो सोते हैं, लेट्स स्लीप। लेट्स स्लीप। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट एडवांस्ड इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can have fluency, which is very useful for your spoken English. Next example. चलो पढ़ते हैं, let's read. Let's रीड। चलो स्कूल जाते हैं, चलो स्कूल जाते हैं। लेट्स गो टू स्कूल। लेट्स गो टू स्कूल। चलो खाना खाते हैं, चलो खाना खाते हैं। लेट्स हैव फूड। लेट्स हैव फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। चलो कमरा साफ करते हैं, चलो कमरा साफ करते हैं। सेकंड एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। वो बात अलग है, मैं कुछ नहीं कहता। वो बात अलग है, वो बात अलग है, वो यहाँ नहीं आता। वो बात अलग है, हम चुप थे। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं वो बात अलग है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर मीन वो बात अलग है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बआसानी इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाएंगे। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर you will be able to speak such as sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end and subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Have a look at complete structure. That is a different matter प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। वो बात अलग है, मैं कुछ नहीं कहता। डेली लाइफ का एक कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज़ बोलते या सुनते हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर, आई डोंट से एनीथिंग। That is a different matter, I don't say anything. वो बात अलग है। That is a different matter. That is a different matter. वो बात अलग है कि वो यहाँ नहीं आता। That is a different matter, he does not come here. That is a different matter, he does not come here. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मज़ीद मिसालें देखते हैं। Let's see some more example for a better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level. Next example. वो बात अलग है, हम चुप हैं। वो बात अलग है, हम चुप है। That's a different matter, we are quiet. That is a different matter, we are quiet. Next example for better understanding. वो बात अलग है, वो खुश नहीं है। That is a different matter, he is unhappy. That is a different matter, he is unhappy. वो बात अलग है, मैं उसे भूल गया।
That is a different matter, I forgot him. That is a different matter, I forgot him. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English, so learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can get fluency which can take you from basic to advanced level and very useful for your spoken English. وہ بات الگ ہے وہ وہاں نہیں جاتا ہے. وہ بات الگ ہے وہ وہاں نہیں جاتا ہے. سبسکرائب انگلش PS for more advanced English sentence structure. Third advanced English sentence structure. ادھر ادھر مت بیٹھو, ادھر ادھر مت دوڑو, ادھر ادھر مت تھوکو, ادھر ادھر مت دیکھو. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں ادھر ادھر. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہیئر اینڈ دیئر. ہیئر اینڈ دیئر مین ادھر ادھر. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. اس فارمولے کو سمجھنے کے بعد آپ بھی ایسے جملے بآسانی انگلش میں بولنے کے قابل ہو جائیں گے. After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end and subscribe English PS for more advanced English sentence structures. Have a look at complete structure. Don't plus V1 یعنی first form of verb plus here and there. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Listen some example for better understanding. ادھر ادھر مت بیٹھو ڈیلی لائف کا کامن سینٹینس ہے جو ہم روز بولتے یا سنتے ہیں. ادھر ادھر مت بیٹھو. Don't sit here and there. Don't sit here and there. Next example for better understanding. ادھر ادھر مت دوڑو. Don't run here and there. Don't run here and there. ادھر ادھر مت تھوکو. Don't spit here and there. Don't spit here and there. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مزید مثالیں دیکھتے ہیں. Listen some more example for better understanding. Keep this point in your mind that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can fluency which is very useful for your spoken English. Next example. ادھر ادھر مت دیکھو. Don't look here and there. Don't look here and there. Next example for better understanding. ادھر ادھر مت جاؤ. Don't go here and there. Don't go here and there. In this sentence here and there is over formula that mean ادھر ادھر یا یہاں وہاں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. Don't go here and there. Next example for better understanding. ادھر ادھر مت کھیلو. ادھر ادھر مت کھیلو. Don't play here and there. Don't play here and there. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹس بکس میں اس کا جواب ضرور دینا. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English, so learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which is very useful for your academic career. So ادھر ادھر مت ہنسو. ادھر ادھر مت ہنسو. Subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Thanks, man.